Good morning students, how are you all? I hope you all are fine at home. Today we are going to start with our revision part, and the topics or the chapter which we will cover today are Civics chapter 10 and History chapter 10. Let's start with the Civics chapter 10. Okay students? So students, we are going to start with revision of Civics chapter 10, that is Law and Social Justice. We will discuss the following point and have a small recap of the chapter and discuss the points which we have already discussed in the video. I am going to take the recap or a revision of this chapter to make you remember all the points once again. Okay, introduction, we will talk about Bhopal Gas Tragedy, what is workers' worth, enforcement of safety law, and new laws to protect the environment. Students, as it is clear from the name of the chapter, that is Law and Social Justice. In this chapter, we will talk about law and how we get social justice through these laws which are made by government for the citizens of the country and which are applicable to each and every one. Which body makes the law for the country? Parliament makes the law for the country. Now, the laws are made to protect the people from any kind of exploitation, or we can say protect the people from any kind of exploitation. Certain laws are made, and these laws ensure that unfair practices should kept minimum in the market, and the relation between worker, consumer and producer should be governed in the way that no one is exploited. इस तरीके का रिलेशन होना चाहिए कि कोई भी एक्सप्लॉइट ना हो. दिस इज अ ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू मेक दिस काइंड ऑफ लॉज विच वी विल टॉक अबाउट दिस इन दिस चैप्टर, that is law and social justice. But students, merely the law making is not enough. What is very much required? That is enforcement of the laws. मतलब कि एक बार बनाने के बाद लॉज का स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, कोई भी ग्रुप उसमें सफ़र ना हो, किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन ना हो. बेटा लॉज तो बन जाते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जो कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इसी चीज़ पे दिया गया है कि लॉ मेकिंग इज़ नॉट इनफ बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड. ठीक है, जो पुअर पीपल हैं, इलिटरेट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, वो लो वेजेस पे ही काम करने को तैयार हो जाते हैं, और जो उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा होता है दे डू नॉट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दैट. ठीक है. नाउ द सेकेंड टॉपिक वी विल कवर, दैट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी. As I have discussed you in the video what is Bhopal gas tragedy, I am writing it in a very short form. ठीक है. The incident took place on 2nd December 1984 and it was world's worst industrial disaster. Why so? Because students, a company named Union Carbide, American company, came to India in Bhopal and set up a factory which produced pesticides. ठीक है. यूनियन कार्बाइड का नाम की एक अमेरिकन कंपनी विच सेट अप अ फैक्ट्री इन द भोपाल. वाई दे डिसाइडेड टू सेट अप अ फैक्ट्री इन द भोपाल? बिकॉज दे थॉट दे वुड गेट अ चीप लेबर हेयर एंड द पीपल आर अनएम्प्लॉयड. वो इजीली मूव करने को तैयार हो जाएंगे और लो वेजेस पे उनको काम करने को मिल जाएगा, सो दैट दे कुड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. एज वी नो द एंटरप्रेन्योर और द इंडस्ट्रियलिस्ट wants to earn maximum profit as much as they can. So they set up a factory in Bhopal named UC, Union Carbide, which produced pesticides. But the incident took place on 2nd December 1984 midnight, where a gas named MIC, methyl isocyanate, leaked
लीक हो गई और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। किसको? पीपल, 50,000 पीपल्स वर किल्ड, वो ब्लाइंड हो गए, आफ्टर इफेक्ट्स देखे गए, एनिमल्स मर गए, बहुत ज़्यादा। सो इट वॉज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। ठीक है बेटा, तो ये वाला इंसिडेंट क्यों हुआ इसका मैं आपको एक शॉर्ट में रीज़न बताती हूँ। जो अमेरिकन कंपनी थी यूसी, जो इनका प्लांट अमेरिका में था, वहाँ पर तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स, कंप्यूटराइज सिस्टम सब लोग अप्लाई किए थे। बट इंडिया में जब वो यहाँ पर सेटअप हुआ उनका, तो उन्होंने जो दे यूज्ड मैनुअल सिस्टम टू सेट अप द फैक्ट्री, एंड जो उनका होना चाहिए था कि भाई हाँ इनको इतने टाइम के लिए ट्रेनिंग पीरियड होने चाहिए, वो 6 मंथ से रिड्यूस कर 15 डेज कर दी गई। नाइट शिफ्ट के वर्कर्स को हटा दिया गया, जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी हुई। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको प्रोटेस्ट किया, वर्कर्स वर्थ की डिमांड की, केस गया सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर कॉम्पनसेशन डिसाइड हुआ कि आपको इतना कॉम्पनसेशन यूसी कार्बाइड को देना पड़ेगा। बट व्हाट अबाउट द ह्यूमन लॉस, कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर में ये एम्फेसाइज किया गया है कि दैट लॉ एनफोर्समेंट और मेकिंग द लॉ बोथ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ, हाउ द लॉज आर इन्फोर्स्ड, how can it be implemented. So there is a provision in our constitution under the right to life which talks about that every citizen has a right to enjoy right to life. So if we talk about enforcement of the law, I will tell you that it is a duty of a government to provide right to life, which guarantees under Article 21, under Article 21, which talks about right to life. So it is a duty of the government to implement that fundamental right which is provided by the constitution to each and every citizen, and to take care that this law is not violated. Okay, now let's discuss about some new laws which were made to protect the environment. If we talk about before 1984, there were very few kind of laws regarding protecting environment, and the enforcement was even much low. Okay, but after 1984, more than 30 laws were made in India to protect the environment as well as to protect the citizens and workers' right. Okay, could pollute the air and the water without any restrictions. Why so? Because there were not any kind of law regarding environment protection. But after making the law, there was a check on them, there was a watch after the law. After making the law, it was said that the polluter is accountable to any kind of damage to environment. अगर कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी डैमेज एनवायरनमेंट में होता है तो सारी लायबिलिटी पॉल्यूटर के ऊपर जाती है। लेकिन ये कब हुआ? After the incident of 1984, which draw the attention of the government as well as the environment activists who gave a pressure to government to make certain kind of laws protect करने के लिए environment को, because the health of the people is very much important according to fundamental right that talks about right to life and under Article 21, which we have just discussed. Okay students, so the more emphasis is given in to this chapter that the law should be made properly and the implementation should be done on the regular basis. Students, environment is something which is used by the coming generation also. So we should not compromise the health of the people at the cost of the industrial development, isn't it? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कॉस्ट पे हम ह्यूमन पावर जो हमारा एसेट है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लॉज बने। सो इन दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट द लॉज विच वर मेड रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर ऐसा पहले होता तो शायद जो भोपाल गैस ट्रेजेडी इतना बड़ा भयानक रूप लेकर आई वो नहीं होता।
Okay students, I hope you understood the chapter. Once again, read it carefully. Let's discuss the internal as well as the copy question of this chapter. So students, let's discuss the internal as well as the copy question of this chapter, which will make you this chapter more clear. So listen to me carefully. Question number 1. What is the full form of CNG? Students, the full form of CNG is compressed natural gas. Supreme Court passed the order that to switch from the diesel to compressed natural gas, which is less polluting in comparison to diesel. This order was passed by Supreme Court. Okay beta. Now number 2. Name the company which was involved in the Bhopal gas tragedy. I told you the company name Union Carbide, UC, an American company. Answer is given on page number 124. The name of the company which came here to set up a factory in India, Bhopal. Okay, the state of Madhya Pradesh, Bhopal, they set up their factory. Number 3. Name the poisonous gas that leaked from UC plant. Beta, the gas named methyl isocyanide, which is such a dangerous gas. When it mixed with the air, it becomes hazardous, as we have seen in this chapter, the Bhopal gas tragedy. बहुत सारे लोग blind हो गए और उनकी death हो गई. That was such a big disaster, we can say. Now let's discuss very short answer type question first. Question 1. Under which article of the Indian Constitution the right to life is a fundamental right? What is right to life? Right to life means that everybody has a right to enjoy polluted free air and the water under the Article 21 of the Constitution, which is provided by our Constitution to each and every citizen of the India, and it is a duty of our government to enforce it properly. If our right, that is right to life, is violated, we can go to court directly. Okay students. Now why, question number 2, why do we need laws? ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है कि लॉज कैसे हों, लॉज का इन्फोर्समेंट कैसा हो. बेटा अगर लॉज नहीं होगा तो किसी के ऊपर कोई चेक नहीं होगा, कोई कीप नहीं होगा, उनको कोई डर नहीं होगा. दे कुड डू वॉट एवर दे वॉन्ट, है ना. So to keep check on the people, as well as we need laws for the welfare of the people and to maintain order in the society. As we have just discussed, to maintain order in the society, अगर कोई laws नहीं होगा, किसी को कोई डर नहीं होगा, तो law and order maintain ही नहीं होगा society में. और the most important is welfare of the people. Okay. Now question number 3, that is short answer type question. Beta, this is very important question. Now what does the Constitution say about child labor? हमारा Constitution child labor के बारे में उसमें क्या दिया गया है? You all know that Constitution is a set of rules which is applicable to each and everyone, and everybody has to follow it. The Constitution states that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment. According to the law which talks about the child labor, that जो भी बच्चा, that child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory. कोई भी ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर कि उसके लिए नुकसानदायक है, उसकी हेल्थ के लिए राइट नहीं है, वहाँ पर वो काम नहीं कर सकता. अगर ऐसा होता है, पकड़ा जाता है, तो उसके अगेंस्ट फाइन या पेनल्टी होती है. ओके. क्वेश्चन 4. What does the fundamental right against exploitation state? The fundamental right against exploitation says that no one can be forced to work for low wages or under bondage. That the industrialist or the, we can say, entrepreneur cannot force anyone to work for them on the low wages. It is a duty of industrialists to provide them equal wages and the right wages, we can say, according to their work. Now question 5. What are the advantages to foreign companies in setting up production in India? As we know that the company name
यूनियन कार्बाइड केम टू इंडिया एंड सेट अप अ फैक्ट्री देयर, तो क्यों वो वहाँ से यहाँ पर आए, क्या रीज़न था उसका, लेट्स डिस्कस। आई टोल्ड यू चीप लेबर, उनको यहाँ पर बहुत इजीली चीप लेबर अवेलेबल हो जाती थी, सो दे कुड अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट बाय सेविंग देयर मनी which they have to give them in the form of wages. They can save that money. Wages that the companies pay to the workers in USA are much higher than in India. वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था, तो उनका मार्जिन, उनका प्रॉफिट कम हो रहा था। For lower pay, companies can get longer hours of work. वर्क ड्यूरेशन ज़्यादा था। एडिशनल एक्सपेंसेस जो कि उनको पर्क्स देने पड़ते थे, हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर द वर्कर्स, वो भी यूसी कार्बाइड जो कि अमेरिकन कंपनी, अमेरिका में जो उसका सेटअप था उसके कंपैरिजन में बहुत कम था, तो दे कुड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट्स व्हाई दे केम टू इंडिया टू सेट अप अ प्लांट हेयर इन भोपाल। ओके, नंबर 6 बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो लॉस हुआ, लोगों ने कंपनसेशन की डिमांड करी कि हमें इतना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए जो हमारा लॉस हुआ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दैट ओनली। क्वेश्चन 6, डू यू थिंक द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी गॉट जस्टिस? क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो विक्टिम्स थे उनको जस्टिस मिला? नो, द भोपाल गैस ट्रेजेडी आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड द पीपल टू लीगली क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर द अफेक्टेड पीपल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लेम किया कुछ मनी का जो उनको कॉम्पनसेशन के फॉर्म में मिलना चाहिए, जो लॉस उन लोगों ने सफ़र किया, उनकी फैमिलीज ने सफ़र किया। द गवर्नमेंट डिमांडेड $3 billion बट हैड टू एक्सेप्ट अ म्याच ऑफ $470 million फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, इतना डिमांड किया और इतना मिलियन इनको मिला। बट आफ्टर 20 years ऑफ द डिजास्टर, पीपल ऑफ भोपाल आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस। नाउ नेक्स्ट, question number 7, what do we mean when we speak of law enforcement? जैसा कि मैंने आपको बताया कि law enforcement का मतलब क्या होता है, we are going to discuss it in the form of answer also. First of all, try to understand the question. What do we mean when we speak of law enforcement? Who is responsible for enforcement? Why is enforcement so important? ठीक है, number 1, law enforcement means implementation of the laws made by the government without discrimination. Means that the laws which are made by the government should applicable to each and the everyone without any kind of discrimination regarding caste, religion, poor, rich, no discrimination. Everybody is equal before the law, so that the benefits of the laws reach the citizens. I am again reading. Please understand it. Law enforcement means implementation of the laws made by the government without discrimination, so that the benefits of the laws reach the citizens. Who is responsible for enforcing the law? Government. It is a duty of a government to provide certain facilities to the citizens of the India, which is being mentioned in the Constitution in the form of fundamental rights. Okay, students. Now, why is it important to enforcing the laws? Enforcement is important because government, number 1, government can control the activities of individuals or private companies to ensure social justice. अगर कोई लॉ बना हुआ होगा तो गवर्नमेंट उनको फोर्स कर सकती है उसको अप्लाई करने का। अगर कोई लॉ ही नहीं होगा तो कौन उनको फोर्स करेगा? तो उनके ऊपर एक डर, एक चेक, एक कीप होता है कि दैट वी हैव टू फॉलो सर्टन नॉर्म्स। नंबर 2, it is important when the law seeks to protect the weak from the strong. It is very much important point. Laws are made to protect weaker section from the stronger ones, क्योंकि जो strong section होता है वो हमेशा weak section को किसी भी तरीके से exploit करने की कोशिश करता है, और जो weak section होता है क्योंकि वो illiterate है, unemployed है, उनको डर है, तो वो minimum wages पे काम करने को तैयार होने के साथ साथ उनका exploitation bear भी करते हैं। Now the long answer type question number 8, that is also important question बेटा. What are the
sources of environmental pollution in your area. Discuss with respect to air, water and soil. What are the steps being taken to reduce the pollution? Can you suggest some other measures? But before that I would like to tell you one thing कि जब enforcement of law की बात की गई तो it was also decided that the industrial area should not be near to the residential area. रेजिडेंशियल एरियाज़ के पास में इंडस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत टाइप का पॉल्यूशन होता है. तो इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस काइंड ऑफ पॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल एयर, व्हीकुलर एमिशंस, फैक्ट्रीज अमिटिंग हैजार्डस गैस, इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन. वाटर, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्रीज का वेस्ट निकलता है वो पानी में, रिवर्स में और गार्बेज के फॉर्म में वहाँ पर डाला जाता है जिससे कि वाटर पॉल्यूट हो जाता है. एंड सॉइल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस. ओके, नाउ स्टेप्स बीइंग टेकन टू रिड्यूस पॉल्यूशन आर. किस किस स्टेप से हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं? ओल्ड व्हीकल्स एमिटिंग पॉल्यूटिंग गैसेस हैव बीन बैंड. ओके, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन रिवर्स, throwing of garbage is prohibited. And some other suggestions are: number 1, promoting the use of public transport as much as possible, and number 2, promoting environment friendly ways to disposing waste, for example composting. So here we finish this chapter. Read all the answers carefully. I hope you will not get any difficulty if you listen this video properly. Let's discuss chapter number 10 of history. Okay students.